Welcome you all. Okay, today I will be explaining the orthographic questions and their solution. Okay, these are the some questions and their solutions. Okay, first I am checking the problem. Okay, checking the question number 4. Okay, this is a question number 4. The part you have to find, you have to draw front view, top view, and left hand side view. This is the object. This is the 3D object. Direction arrow. Okay, direction arrow कौन से साइड में, राइट साइड में. Okay, means you have to see the object from this side. This is your front view of the object. This you have to, for the top view you have to look from the top of the object. For side view you have to look from this side. First क्या करना है, you have to find length, breadth and height. Suppose एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है तो क्या करना है, यहाँ पे देखिए, for length this is 20, again this is 20, 20 plus 20 is 40, again this is a 10 given. बस यहाँ पे कुछ गैप दिख रहा है. ओके, यहाँ पे कुछ गैप है, इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पे वी हैव टेकन लेंथ 60 एंड वी हैव टेकन लेंथ इज 50. आप कौन सा भी ले सकते हो. ओके, यू कैन टेक 60 और यू कैन टेक 50. ओके, सो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड लेंथ. तो लेंथ कितनी है, 60. अगेन अगर लेंथ राइट में तो ब्रेथ आपकी लेफ्ट साइड में रहेगी. दिस योर फ्रंट टू, दिस योर लेफ्ट हैंड साइड. और लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट साइड में ड्रॉ करते हैं. ओके, बिकॉज वी आर यूजिंग ओनली फर्स्ट एंगल मेथड. तो यहाँ पे कितना है आपको मिल, लेंथ 60, अगेन ब्रेथ कितनी है 50, अगेन हाइट कितनी है, हाइट दिस इज 20, 20, अगेन दिस इज 10. ओके, 10 प्लस 20, हाइट इज 30. तो क्या करना, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड हमेशा राइट साइड में ड्रॉ करते. ओके, मीन्स you have to draw front view in the second quadrant and top view in the third quadrant and left hand side in the first quadrant. Okay, first you have to design the box frame of front view, top view and left hand side view. Okay, जो भी ऑब्जेक्ट आपको विजिबल है दैट यू टू ड्रॉ इन अ डैश लाइन. जो ऑब्जेक्ट आपको सपोज फ्रंट व्यू के लिए आप इस साइड से देख रहे हो, जो आपको ऑब्जेक्ट विजिबल नहीं है, हिडन है. ओके, ओके मीन्स डायरेक्ट आपको विजिबल नहीं, क्या करना है, दैट यू टू ड्रॉ इन अ डैश लाइन. यहाँ पे देखो डैश लाइन, वापस यहाँ पे ये एज मुझे विजिबल नहीं इसके जो. ओके, इसके पीछे जो एज है ऐसे, इस एज है इसके जैसे एज यहाँ पे है, तो विजिबल नहीं, इसके कारण यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डैश लाइन में शो किया. ओके, तो फ्रंट से मुझे क्या मिलता है, लेंथ एंड हाइट. टॉप से मुझे मिलेगी वापस लेंथ एंड ब्रेथ. मीन्स यू टू, आपको क्या करना है, यू टू ड्रॉ वर्टिकल हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन लाइंस फ्रॉम द फ्रंट टू टॉप व्यू विद द हेल्प ऑफ सिमेट्री लाइंस. ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हो. ओके, बट यू हैव टू ड्रॉ द प्रोजेक्शन लाइंस, projector lines in faint line. Okay, in color code of 251. Okay, this is question number 4. Question number 4. Again, this is question number 3. Okay, you can see here. Okay, for side view, you are looking from this side. जो इनर सर्कल है तो आपको विजिबल नहीं, इसके कारण यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन हमने ड्रॉ किए और इसको डैश लाइन में शो किया यहाँ पे. Okay, again यहाँ पे भी देखिए, you can see in this object for front view you are looking from this side. Again आपको एज विजिबल है क्या, नहीं, यहाँ पे भी एक एज है बैकग्राउंड में, जो एज विजिबल नहीं, इसलिए हमने यहाँ पे इसको डैश लाइन में ड्रॉ किया है. ओके, अगेन सेम मेथड यू हैव टू यूज. यू हैव टू ड्रॉ फर्स्ट वर्टिकल हॉरिजॉन्टल लाइन, देन यू हैव टू ड्रॉ दिस रेफरेंस स्क्वायर. अगेन यू हैव टू डिजाइन दिस बॉक्स फ्रेम. तो फर्स्ट यू हैव टू फाइंड लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. 20 से आपको लेंथ मिलेगी 82, 82 बाय 42 का आपको क्या करना है, रेक्टेंगल ड्रॉ करना है. ओके, इसके बाद यू हैव टू ड्रॉ द रेक्टेंगल ऑफ टॉप व्यू. इस टॉप व्यू की बॉक्स फ्रेम डिजाइन करने के बाद यू हैव टू डिजाइन द, यू हैव टू ड्रॉ द साइड व्यू. साइड व्यू कौन सा है, राइट हैंड साइड व्यू. ओके, इन दिस वे. यहाँ पे देखिए, और साइड व्यू के लिए आप, यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस साइड,
आपको इनर सर्कल विजुअल नहीं, यहाँ पे भी डैश लाइन में हमने ड्रॉ किया, यहाँ पे भी डैश लाइन में शो किया है यहाँ पे, है ना। अगेन इन द टॉप व्यू में भी आपको इनर सर्कल विजिबल नहीं होगा, तो इसको हमने अगेन यहाँ पे डैश लाइन में शो किया है विद हेल्प ऑफ प्रोजेक्शन लाइन्स। प्रोजेक्शन लाइन्स यहाँ से हमने प्रोजेक्ट किए। ओके, नाउ वी कैन सी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या अगेन डायरेक्शन एरो लेफ्ट साइड में, तो कौन सा भी ड्रॉ करना है, यू टू ड्रॉ राइट हैंड साइड। तो अगेन यू टू फाइंड लेंथ ब्रेथ हाइट, इसकी लेंथ कितने 115, ब्रेथ इज 45, हाइट इज 70 mm। तो अगेन कहाँ पे रहेगा, राइट हैंड साइड व्यू हमेशा लेफ्ट साइड में ड्रॉ करते हैं, मीन्स यू टू ड्रॉ फ्रंट व्यू इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड टॉप व्यू इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। आपको ये विजिबल कौन सा, ये ऑब्जेक्ट विजिबल है, इतना एज इट इज ड्रॉ करेंगे, लेकिन टॉप व्यू में आपको एजेस विजिबल है, ये वाली कॉर्नर एज और ये वाली कॉर्नर एज, ये आपको विजिबल नहीं। इसके कारण यहाँ पे देखो, यहाँ से हमने प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ किए, ये देखो यहाँ से, और ये इसको डैश लाइन में शो किया यहाँ पे भी। ओके ओके, आई हैव शोन द दिस एज इन अ डैश लाइन। अगेन फॉर साइड व्यू आई एम लुकिंग फ्रॉम दिस साइड। ओके, साइड व्यू के लिए आपको यहाँ से देखना है, तो यहाँ से आपको ये वापस, हाँ सेमी सर्कल की जो आपको एज विजिबल नहीं, और वहाँ पे वापस ये वाली भी एज विजिबल नहीं। तो साइड व्यू की आप यहाँ से देख रहे हो, इसको यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे और इसको डैश लाइन शो करना है, वापस एज भी आपको विजिबल है। अगेन यू टू शो दिस एज इन अ डैश लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। Again question number 6, again you have to draw front view, top view and right hand side view। तो इसमें वापस डायरेक्शन इस साइड में, अगेन you have to draw this semi circle, half circle as it is, you have to draw this edges। okay, तो क्या करना है, from this point height is given 35, again towards left side 15 means height 35, towards left side 15, again from this point to this point depth is given 10। okay, depth is given 10, यहाँ से नीचे 10, again from this point to this point given 15। okay, 15, again height again 10, again 15 and depth 35। okay, again towards right side में कितना distance है, again right side distance, इसकी width कितनी total, width is 50 means 30। okay, the circle diameter is 30 and total length is 45। okay, 30 minus 45 कितना 15 means this will be 7.5 towards left, 7.5 towards right। okay okay, it is showing 8। why it is showing 8, because go to the dimension style, okay, modify pyramids। तो इसमें क्या है, pyramids में precision I have taken 0। okay, suppose I am taking precision 0.0, 0.1, so it will be showing in a 0.1 decimal। okay, set current, close। now you can see here it is showing 7.5। again I am changing the dimensions, dimension style, modify diamonds, I am taking diamond precision 0। okay, if you want to change the text height, you can change from the here। okay, text height take up 5, always you have to select this option as a standard। okay, set current and close। okay, now see the changes in the dimension। next, now for side view I am looking from this side, again I have, मुझे एज विजिबल नहीं है और वापस से सर्कल की एज। ओके, नहीं तो आप बोल सकते हैं आपने यहाँ पे कुछ ड्रॉ किया ऑब्जेक्ट, ये भी लाइन आपको विजिबल है, तो यू हैव टू शो दिस लाइन डैश लाइन, वैसे प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, अगेन यू हैव टू ड्रॉ राइट हैंड साइड। तो आप यहाँ से देख रहे हो, यू हैव विजिबल दिस एल ऑब्जेक्ट, दिस स्क्वायर, अगेन दिस स्क्वायर। जो ऑब्जेक्ट विजिबल है दैट यू हैव टू ड्रॉ इन अ डार्क लाइन। जो ऑब्जेक्ट विजिबल है, ये वाली एज विजिबल, इसे यहाँ पे हमने डैश लाइन में शो किया है। अगेन फॉर टॉप व्यू, अगेन you are visible this squares, okay, and this rectangle। okay, again for side, in a side view you are visible this rectangle, again this U shape। okay,
see the solution. Okay, and you can do the practice at home. If you have any doubt or any question, you can please call me anytime. Okay, so these are the questions and their solution. Now in this question, see, you have to draw front to top view, right hand side view, but you have to draw कट सेक्शन. ओके, राइट हैंड साइड जो है यू हैव टू कट सेक्शन ड्रॉ करना है. यहाँ पे देखिए डायरेक्शन ए दिया है, ए एंड यहाँ पे एरो है, मीन्स यू हैव टू कट दिस ऑब्जेक्ट इन हाफ पार्ट एंड उस हाफ पार्ट को यू हैव टू शो, मीन्स यहाँ को कट सेक्शन में दिखाना है. फॉर दिस ऑब्जेक्ट यू हैव टू हैचेस लाइन, यहाँ पे हैच लाइन ऑप्शन है, यहाँ पे देखो ड्रॉ टूलबार में हैच स्वैच एड पिक पॉइंट्स. अगेन यू हैव टू फाइंड लेंथ, ब्रेथ, height. Okay, again you have to find length, breadth and height. You can see the solution. In the front view, I have visible this circle, inner circle, again this middle circle, again this outer circle. So first क्या करना है, you have to locate the center line first, center point first. इसको offset कीजिए. Okay, 40 कितना रहेगा, 40 plus ये 7, 47 के ऊपर offset कीजिए. Draw this rectangle. Okay, base plate को draw करना है, you have to draw this base plate. Again ऐसे. Okay, again draw the top view. सबको visible object. Okay, again question number 7. Okay, we have already solved. Now question number 9. You can see in the question number 9 again x and y given. Okay, y stands for side view, x stands for front view. Okay, there is x and y is gone, so you have to draw front view. Okay, right side view हम हमेशा लेफ्ट साइड में ड्रॉ करते हैं, जो विजिबल है दैट ऑब्जेक्ट यू हैव टू ड्रॉ एज इट इज. ओके, वापिस आपको ये सर्कल, एज visible as it is, you have to draw with the help of dimensions. Now you can see question number 10. क्वेश्चन 10 में यहाँ पे वापस आपको जो है अगेन वैसे फाइंड करना है. आपको सॉल्यूशन देखना है तो क्या करना है, जस्ट पॉज दिस वीडियो. ओके, एंड ड्रॉ द सॉल्यूशन. नाउ क्वेश्चन नंबर 11. हाँ, okay, in the question number 11, okay, here is dimension is 45. Okay, there are changes in this dimension, there is changes in this dimension. You have to take 70 instead of 45. आपको यहाँ पे 70 लेना है. ओके, 70 लेना है. एग्जाम में कंफ्यूज नहीं होना है. यू हैव टू टेक 70 हियर. ओके, जो आपको विजिबल है यहाँ से x, इसके ऊपर आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज योर लेफ्ट हैंड साइड एज इट जो विजिबल है. अगेन इस इनर सर्कल विजिबल नहीं, इसके कारण मैंने डैश टाइम ड्रॉ किया. ओके, यहाँ पे बाईपास हो रहा है यहाँ तक, लेकिन जो है आउटर सर्कल मीन्स यहाँ से यहाँ तक आपको ड्रॉ करना है. आउटर सर्कल के वापस ये आपको रिब विजिबल है. अगेन दिस जेड सेक्शन, इट्स टोटल लेंथ कितनी, 70, एंड दिस इज फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, दिस इज 50 है, 50 है. ओके, फॉर इन द टॉप व्यू यू आर विजिबल दिस. अगेन साइड डायमेंशन कितना, 60. यू आर विजिबल दिस रेक्टेंगल 45 by 60. 45 by 60 यू आर विजिबल दिस रेक्टेंगल. इसको एज इट इज ड्रॉ करेंगे 45 by 60. यहाँ पे देखो 45 by 60 का रेक्टेंगल आपको ड्रॉ करना है. ओके, दिस इज. इसके बाद आपको ये इनर सर्कल विजिबल नहीं, बाईपास और इसके लिए यहाँ पे डैश लाइन में शो करना है. वापस आउटर सर्कल विजिबल है, उसको एज इट इज ये रहेगा, आउटर सर्कल की बाउंड्री ये. ओके, अगेन यू हैव टू ड्रॉ दिस सर्कुलर ऑब्जेक्ट. ओके, फ्रॉम द फ्रंट यू हैव टू स्टेज दिस सेंटर लाइन. फॉर साइड यू आपको ये वापस हाफ सर्कल विजिबल, इनर सर्कल विजिबल, वापस आउटर सर्कल ये रिब, अगेन दिस रेक्टेंगल एजेस एज इट इज आप इसको ड्रॉ करेंगे ऐसे. Now next, again this is a
object, 3D object. Again, you have to find length, breadth, height. Now, direction arrow किस साइड में दिया है? Okay, direction arrow इस साइड में. Suppose exam इस साइड दिया तो you have to take this as a front view. And this will be your front view, and this will be your top view. लेकिन ये top view rotate होगा, है ना? Now, we are looking from this side. यहाँ से आप देख रहे for front view. As it is draw करेंगे, you are visible these pillars. Okay. So you have to draw this start point. So this start point height is 65. From this point to this point height is 65. Again towards left side 90, left side 90. Uh, sorry, at 85, and towards left side 90 again depth 85. Again from this point to this point 30. Again height is, this is 10. Okay, you can take here 10. Okay, 85 minus 10 75. Again towards left side 30. Again 75. In this way, you have to draw the object. From this point to this point, height is 26, and from this point to this point is 25. So you have to draw this. As it is side view में आप यहाँ से देख रहे हो, side view में आपको वापस ये वाली edge visible नहीं है, इससे bypass हो रही है यहाँ पे. Okay, तो ये edge visible नहीं, इसका यहाँ से हमने projection line draw किए. Projection line draw किए तो ये you have to take the, you have to draw this line in a dash line. Okay, now इन द टॉप व्यू में क्या विजिबल है? टॉप व्यू में आपको रेक्टेंगल. ओके, ये रेक्टेंगल और ये रेक्टेंगल. एज इट इज यू टू ड्रॉ दिस 3 रेक्टेंगल्स. ओके, फर्स्ट रेक्टेंगल, दिस इज सेकंड. जो आपको विजिबल है वापस एज, ये इनर सर्कल. ओके, दैट यू टू ड्रॉ इन अ डैश लाइन. दिस इज इनर सर्कल को आपको डैश लाइन में ड्रॉ करना है. नाउ वी कैन सी प्रॉब्लम स्टेट क्वेश्चन नंबर 13. वापस दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन. क्या करना है? फ्रंट व्यू, लेफ्ट हैंड साइड व्यू, टॉप व्यू. तो फ्रंट व्यू के लिए यहाँ पे दिया है एक्स. लेंथ कितने 60, ब्रेथ इज 57 एंड हाइट इज 67. Okay, height is 60. Yeah, I have taken wrong. Okay, height is 60. Okay, तो ये डिजाइन बॉक्स जो विजिबल एज इट इज आपको ड्रॉ करना है. यहाँ से सपोज दिस मस्ट स्टार्ट पॉइंट, दिस मस्ट स्टार्ट पॉइंट. यहाँ से 50 टुवर्ड्स लेफ्ट कितना आना है? टोटल लेंथ इज 60 मीन्स 20. मीन्स दिस इज 20, दिस इज 20. From this point to this point 20. Again this point to this point is given. Now this is 20 means you have to take this as a 10. To join this points 10, join this line again, draw this line. Okay, you have to draw. In the top view, again in the top view you have visible this rectangle, this square, this square. Okay, but you do not have visible this edge. This edge आपको ये visible है क्या? नहीं. तो again you have to draw the projection lines. यहाँ से आप प्रोजेक्शन लाइन ड्रॉ करेंगे, इसको इस डैश लाइन में शो करना है. यहाँ पे फॉर साइड व्यू अगेन यू आर लुकिंग फ्रॉम दिस साइड. आपको ये एज विजिबल है, दिस एज. ये वर्टिकल एज है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ये. लेकिन ये आप